but just because of that extra bounce, he couldn't manage to get that one into his bat, and no run scored. And second time in this over, Gopal Krishna bowling from the Kala Mandira and right arm over the wicket balls. This time again pulls that one nicely down to find the region boundary for 4 runs. This time Anirudh not tried to flick the ball, but he just tried to pull the ball and pulls it nicely down to find leg for 4 runs. With that boundary, Skobat moves on to the correction, the 4 on the board. In fact, the first run for the team. The first run for the team was Sudhindra Warriors. Again, played it nicely into a gap, beautifully played. Finds a gap between cover and extra cover. Back-to-back 2 boundaries takes the total score into 8 now without loss of any wicket. Anirudh just started to open up here with 2 very good boundaries. One down the leg side, one other down the extra cover. 8 without loss of any wicket. Gopala Krishna. The right arm over the wicket to Anirudh. This time far outside the line of off time, but he is standing well outside the line of off time, and the umpire called it a fair delivery. Ball pitched in the line outside the line of, but Anirudh is of course a little master, is standing well outside the line of leg stump, so that he couldn't manage to reach that delivery, and right call from umpire. 8 without loss of any wicket. Gopal Krishnan once again going for the cut shot. This time it's too early into the cut shot. If you see, Anirudh wanted to go for the cut shot, but played it too early. A slower one there from Gopala Krishna, and missed it completely. Wicketkeeper behind the stump. Datta did the rest, and no run scored. 8 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. And steady start from the opening batters. Got a 2 boundaries so far in this over. Oh, again, identical mirror display of the previous delivery. This time, Anirudh wanted to steer the ball, but missed it completely. Good comeback by Gopala Krishna. After completion of first over, it's 8 without loss of any wicket. Team Sudhindra Warriors against Dambekallu Challengers. This is the match number 6 of day number 2. After this, we need to complete another 4 matches. And tomorrow will be the final day of this cricket tournament. It's a huge day, because tomorrow we're going to start the day in the morning, exactly at 9 o'clock. And we need to finish the as earliest before 8 or 9 in the evening. And here comes second over. Akshay brought into attack from the far end. Shot outside the line of off time, played it gently down to cover point region. No power whatsoever in that particular stroke from the batter Vasudev Anirudh. Vasudev, one who played a very good innings in the previous match. And he got his first run. 9 without loss of any wicket. Oh, this time I think it's a caught behind the wicket. And I think it's a caught behind the wicket or stump out. Just we need to clarify. It's a stump out. It's after 1 bounce collected by the wicket keeper. Maybe the ball is just bumped in and then came into the hands of wicket keeper Datta. And that means it's a run out. And because of the bat, connected the bat, so it's a run out. It's not a stump out, it's a run out. So 9 for 1 in the over number. Third is in progress. Second in progress, correction. The hero of the previous match, Aditya, but played it gently and misfielded by the fielder, and cost the boundary for that. So welcome boundary as well as the first boundary for Aditya. And facing his first delivery, he got a lucky boundary. And much required boundary in this over. The runs which is dried in this particular over. And Aditya, but some hooves and ahs goes around, because some promotion from for the fielder from the cover point to mid wicket for that misfield. 13 on the board, and again played it quite edging it down deliberately by Aditya to get the single down to third man. 14 for 1. The previous match he played very well, but unfortunately he ended in the losing side, even though got a very good runs, but couldn't manage to defend that total. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Appeal for caught behind, but and batsman is walking. My goodness, absolutely good sportsman spirit shown there by Vasudev Kamath. This is absolutely feather touch. It's very difficult for the umpire to judge sometimes because of the feather touch. You can't hear
because it's a soft tennis ball cricket. It's difficult for the wicket keeper, of course, for the umpire. But wicket keeper and batsman will go into judge. Of course, this is a very good spirit shown by Vasudeva Kamath, and that will going to lift the spirit of the game always when you are showing a true spirit of the game. Just have a look at it in the replay. No chance we can see that. Very difficult for the umpire to judge. The ball is just has got a further touch. The wicketkeeper is very confident because he can hear that soft sound, and even the batter is also. It's 14 for 2. In the over number second, it is in progress. Oh, lovely delivery. Just going for the cut shot, missed it completely. Over number 2, which is comes in, and good over from Akshay Pai. In this over, he picked up a wicket as well. 2 wickets in this over. Great bowling, which is comes in, and it's 14 for 2 after completion of over number 2. Next match, Nagangatte Panther versus Ugrana Sevaks. दोन्ही टीमा कॅप्टन आणि टीम रजिस्टर कर का. दोन्ही टीमा फर्स्ट कॉल आहे. Naganagatte Panthers versus Ugrana Sevaks will go into play the next match. Ramnath brought into attack one more very useful all-rounder for the side of Dambekallu challengers, and he will go into bowl to Adi. Slashed and good fielding. Oh, mix up, and is face the penalty. Now he is lifting the stumps. Umpire asking for the third umpire to give the judgment, and of course we need to see that the third umpire has been asked for the third umpire. Let's wait and see what could be the addition from the third umpire. Will going to be out or not? And so, of course, the first attempt, the one stumps is uprooted from the leg, but one stumps has got in the position, the bills which is in the stumps. So the second attempt, the bowler uprooted that stumps. Of course, that the third attempt is not comes into play because already, which is in a second attempt itself, the bowler complete the job. The wicketkeeper completes the job. 14 for 3, and here comes the next delivery. Right arm over the wicket, bowls, cuts it into
mid-off region for a single. With the addition of that single scored, now moves on to 15 for 3 in the over. Number third is in progress. Varun back on strike now. And Varun and one more batter was there, but the batters out there in the middle. Now Varun will going to take the strike. Oh, wanted to go for the cut shot. This time the ball which is very close to the body. Not that much of fit for the cut shot, and lucky for him that ball is just missed his bat and wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Ramakant bowls again, played it into mid-on, not for run, lack of placement. The good bowling performance so far from the bowler Ramanath in this particular over, and it's 15 for 3 in the over. Number third is in progress. Searching for the right track, Sudhindra Warriors so far. भारत स्टेनलेस स्टीलाचे के वासुदेव कामत आणि वरुण शनी आणि जय कोरनू वेदिकेर येवका म्हूण निमगून घेता आसती वरुण शनी आणि वासुदेव कामत. Again played it down to third man region for boundary there, and 19 for the loss of 3 wicket. Varun and Vasudev are the batters are in the middle. Even chief guest also the same name, Varun and Vasudev. It's absolutely very good coincidence and pitch and in the stage. Same name players and same name chief guests. 19 for 3 in the over. Number third is in progress. Ramanath again bowling with a short run up to Varun. The SVT Trophy Season 4 is in progress. Oh, tries that one, but lack of placement and fielder misfielded. Of course, he fielded well. Tried to return the ball in underarm throw, but he missed the ball. And again, the ball slipped out of his hand. Good over. Naravi Vignesh Pai. Nummidala Riday Kornu Vedike Reuka. Excellent over there from Ramanath. In this particular over, he really managed to tighten up the screws with a good deliveries. 20 for 3 after completion of 3. Last 2 overs remaining in the innings. And wait and see how Varun and Vasudev will go in to get some good total here. Bowler brought into attack to bowl fourth over. Vittal Bhatt starts with the short pitch delivery. All the time in the world for Varun to pick that one. Because we can see that even the batsman is asking for the umpire to give the no ball, but he's seeing that ball is not really coming to the batter. He's have to wait for the ball. Just have a look at the short pitch delivery. And just like a forearm tennis stroke. And just climbing onto that and played it nicely for 4 runs. Nicely done. No need to run for that. Ball went like a tracer bullet. And this is a juicy full toss. He can't do the mistake of bowling that kind of delivery to the caliber of Vasudev Kamath. They absolutely hit that one right from the middle of the bat and scoring some important runs for his team. 28 for 3 in the over. Number 4 is in progress. Vittal Bhatt again. Oh, that ball is maybe that chance of run out as well. Again, one more single with that single score. Number down to 29 for the loss of 3 wicket in the over. Number 4 is in progress. Oh, lovely delivery. Now they're going for the run. Now going for the run in the form of by misfield dive by the wicketkeeper behind the stump. 30 for 3. Fourth over is in progress. Vittal Bhatt. Bows rise that one. Didn't quite time it. Oh, misfielded. Sloppy fielding there by the fielder. And a welcome boundary again for the team. They're enjoying each and every run. Sudhindra Warriors getting some lucky runs here for the misfield. The fielder is absolutely trying to get the ball by bending his knees, but ball is just defeating him. 34 for 3. One more full toss, one more boundary. The fielder, I think, district Yuva Morcha BJP president Ani Aila Saji. They kornu tumi vedike reuka. 38 for 3 after completion of 4 over. Last over remaining in the innings of Sudhindra Warriors. Nandan Mallya
तुम्ही दयकोरनु ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ ದಶೀಜಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣ ನಂಗೆ ಲೊಟ್ಟಸತಿ ನನ್ನಿದೆಲ್ಲರಿ ವೇದಿಕೆ ರೇವುಕ Pawan Pai brought into attack to ball the last over, and the batter will going to take the strike. Varun played it nicely into mid-wicket region for a single. Good partnership is progressing between these two. Varun, नागनकट्टे पॅन्थर्स आणि उग्राण सेवक टीमाका फायनल कॉल टीम रजिस्टर कोरका it's 39 for 3 in the over number 5 in progress, and here comes the next one. Again played it very nicely in the late. The late cut comes into play. Lovely shot there from again. What innings playing here by Vasudeva Kamath. Again, he's taking the shit ankle roll for his team. And when the wickets are tumbling in front of him, he's standing tall in the other end and played a responsible innings so far for his team. 43 for 3. He's batting on 26 now. And now facing Pawan. Is right arm over the wicket, far outside the line of off stump. Pawan maybe looking for some short pitch delivery, but he missed the line completely. Gone far outside the line of off stump. It's a spectra wide. 44 for 3 in the over number 5 in progress. Here comes again Varun, right arm over the wicket. Balls one more wide, one more extra. The bowler is absolutely in trouble. The fails to get that line and length what he is looking for. 45 for 3 in the over number 5 in progress. Pawan Pai again. Ball slash it hard and down to cover point for one more boundary. Once again, what innings is playing here for the team. The very important runs coming in this last over as well. 49 for 3. And in the over number 5 in progress. Varun Kamath is batting on 30. Out of 49, he himself scored 30. And that means more than 60% of the runs which came from his bat. One more extra fielder has been added to onside region towards the square leg. There's a mid-wicket, the mid-on, which is wideish. The fielder at long off is also wideish. Almost you can say that extra cover. There's cover point, gully and third man. Just getting away from the line of the ball, wide outside the line of leg stump. And 50 comes up. 50 comes up here for Sudhindra. This is the second 50 for them. The first match also they scored 50 plus runs, but fails to depend. And now they once again crossed the 50 plus. Driven like a placement, straight to the hands of fielder, no run scored. The first better delivery in this over there from Pawan Pai. And last two deliveries left in their innings. Again, the fifth time in this over. Again, played it and good piece of fielding. Excellent fielder. Over. Oh! The fielder. Oh, no. Very lucky for him that ball is not really traveled quickly. Otherwise, it's going to be a disaster. And very lucky escape. And last delivery will go into commence of their innings. 50 for 3. Vasudeva Bhatt. Can he get one big shot here? Varun, correction. Played it nicely into the long bid on for boundary. So with that boundary, they finish their innings in a style. 54 for 3 now. And Varun Kamath, correction. Varun Kamath once again played the excellent innings for his team. He remains unbeaten after scoring 34. And he played a sheet ankle roll, Varun Kamath. And after completion of over number 5, it's 55 needed for the victory. And wait and see how quickly they will going to get this total. And Dambekallu challenges will going to take play the next innings. I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you.
नेक्स्ट मॅच उग्राण सेवक टॉस विन झालेला असा त्यांनी फिल्डिंग चूज केला. As far as the required run rate is concerned, exactly 10.80 runs per hour they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और जहाँ तक सवाल है दोनों आरंभिक बल्लेबाजों का, opener Sarna comes out to the middle for Dambekallu challengers. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए Sridatta and Vittal Bhatt the openers, and the bowler starts the fresh proceedings is Vasudev Bhatt. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. 54 रनों का लक्ष्य, 54 द टारगेट फॉर देम. और पहली गेंद दिस टाइम ही bowled a sloppy delivery, just drifting down the leg side at the last moment. वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है. अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त. ये गेंद कट किया इस वक्त. गेंद पहुंची गली पर, एक रन का इजाफा, एक रन मिलेगा. क्विकर पीस ऑफ फील्डिंग, बैकअप, बेहतर बैकअप, और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं. 1 run added to the total. Dambekallu challengers are moving up to 2 now without single, and this is the first over of their innings, started just short while ago. और गेंदबाज वसुदेव भट्ट गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज विट्ठल भट्ट जो कि इस वक्त सामना करते हुए कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट बॉल द बॉल kept low at the last moment, just went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. और गेंदबाज इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार driven that one just wide of the bowler, और नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज 2 कदम आगे जरूर निकले थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि उस गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है. 3 गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं, 2 रन बिना किसी नुकसान के. और गेंदबाज वसुदेव इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इनटू द गैप एज वेल, एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल. और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए, और निस्संदेह यहाँ पर ऑन साइड पर कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया था मिड विकेट पर. और जहाँ तक सवाल है चौके का, तो चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए, और गेंद जाकर सीधे एक बच्ची पर टकराती हुई जो मिड विकेट के बाहर जो बैठे हुए हैं. और इस बार गेंद को क्रैक किया था इस वक्त स्क्वायर एक्स्ट्रा कवर पर चौके के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर. स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 10 ऑन द बोर्ड, yet to lose any wicket. 2 fantastic struck came from the bat of Vittal Bhatt. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद मोड़ दिया इस वक्त गेंद को शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. फर्स्ट ओवर has been came to an end in Dambekallu challengers innings after first over, chasing the victory target of 54 in 5 overs. They made a pretty good start. In fact, they managed to score 11 runs on the board. 55 in fact the target. That means now they have to score 44 more runs for victory in remaining 4 overs, with a required run rate of exactly 11 runs per over. This is the match number 6 of
the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 GSB Volunteers Premier League Season 4 is now progressing here fantastically in this beautiful Kendra High School ground, and this tournament is proudly organized by SVT Volunteers Association, Cast Mangalore. Official sponsors Abharan और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया, इस वक्त गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज कुछ हद तक आगे जरूर निकल आए थे, लेकिन अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर, 11 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, जस्ट मिसिंग 2 फॉर अ ऑफ स्टंप एंड अ वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, एंड विद दैट वाइड रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 12 on the board, yet to lose any wicket in the over number, second in progress. Still 43 to get for victory in remaining 23 deliveries, और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. Cuts, and this time he finds the gap as well. Fantastically struck. Just a little bit of width for the batsman, and he just quite hitting that one fine down to a point boundary for a boundary. So just to have a look at this in the replay, just cut it away fine and finds the gap as well. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर, सेकंड इन प्रोग्रेस, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद धीमी गेंद, बाउल्ड आउट, फैंटास्टिक लेग कटर डिलीवरी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वन फ्रॉम द बॉलर, धीमी लेग कटर गेंद थी, और गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी ज्यादा टर्न घुमावली कि गेंद सीधे जाकर ऑफ स्टंप पर टकराई, ऑफ स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ यहाँ पर, और एक बेहतरीन गेंद के जरिए ये विकेट यहाँ पर गेंदबाज प्राप्त कर चुके हैं. पंचम की गेंद थी, और यहाँ पर देखिए पिछले गेंद पर चौका लगाया था, और उसके बाद की गेंद धीमी लेग कटर गेंद उन्होंने फेंकी थी, लेग स्पिन गेंद थी, और आखिरकार इस गेंद पर विकेट प्राप्त करने में सफल. The scoreboard says 16 for the loss of 1 wicket, 21 balls left, 39 runs required. New batsman Pawan Pai is now comes out to the middle. एक बार फिर से लेग कटर गेंद थी इस वक्त, धीमी लेग कटर गेंद, और गेंद को इस वक्त कट करने के प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ absolutely fantastic over progressing here so far from the bowler पंचम, और सिर्फ एक चौका इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, लेग कटर pulls and he's gone this time, not quite hold of that stroke, and he just paid the penalty for that. So 2 overs completed, 16 for 2 for Dambekallu challengers, chasing the victory target of 55 in 5 overs set by Sudhindra Warriors. They are really struggling out in the middle. 16 for 2 after 2 overs. That means now they have to score 39 in remaining 18 deliveries. And the required run rate is now straight away gone up to exactly 13 runs per over. 3 ओवर में 39 रन इस वक्त बनाने हैं, और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, गोपाल कृष्णा नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद नए बल्लेबाज के रूप में गेंदबाजी शुरू करते हुए लेग स्टंप से बाहर इस वक्त गेंद थी, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, एंड wide declared by umpire, and with that wide run the scoreboard moving up to 17 on the board for losing 2 wickets at the start of the third over in fact. और गेंदबाज अनिल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ अनिरुद्ध माफ कीजिए गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और श्री दत्त जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी दम्बेकल्लू चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को, और अनिरुद्ध लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 18 रनों पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. Still 3 overs left in overall calculation in their innings. 37 more runs now they have to score for victory. और निश्चित रूप से जहाँ तक चौकों की ज़रूरत है इस वक्त, चौकों का जहाँ तक सवाल है इस वक्त, चंद चौकों की सख्त ज़रूरत दम्बेकल्लू चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए. गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है. Just a single run he got, and with that single run the scoreboard moving up to 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. 2.1 overs bowled in their innings, और गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, finds the gap as well. This time he finds the gap as well, और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज fantastically struck this time. He just turns it around the corner
And at last he's got the boundary for that. 23 on the board for losing 2 wicket in the over number 3 in progress. और अनिरुद्ध भट्ट इस वक्त अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके का खेल। बैक टू द बॉलर की दिशा में स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को ढकेल दिया था। इस वक्त गेंदबाज की दिशा में रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अनिरुद्ध ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। 1 रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास। 24 on the board. Losing 2 wicket in the over number 3 in progress. 15 balls already bowled in this over. 15 have to come. And in remaining 15 balls, they have to score 31 more runs for victory. Anuruddh. On side पर मोड़ा, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन मिला जरूर। जोखिम भरा रन यशस्वी पूर्ण करते हुए एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन पर। 25 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. What a fantastic match is now progressing here. और इस बीच अनिरुद्ध दाहिने हाथ राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद थी और वाइड गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। बल्लेबाज ने गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन गेंद उनके पहुंच से काफी बाहर। और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 26 रनों पर। It's 26 for the loss of 2 wickets. This is the third over of their innings is now progressing here. 14 balls remaining, 29 runs required. They badly required a couple of force boundaries at this stage to get back into this match. The asking run rate is not creeping up for them. Again, Dujala just over the bowler side, and this time he finds the gap as well. Straight hit area पर गेंद को उछाला था गेंदबाज के सिर के ऊपर से और स्ट्रेट हिट एरिया पर चौका प्राप्त करते हुए देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और अंपायर ने गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया झुकते हुए और चौका इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 30 for the loss of 2 wicket. That means 25 runs required from 13 balls. अनिरुद्ध इस बार उछाला मिड विकेट पर और यहां पर आसान सा रन आउट हो चुका है। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे लेकिन नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं और आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका। देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद को उछालने के बाद दौड़ पड़े थे और थ्रो पहुंचा मिड ऑन फील्डर का सीधे विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपर ने अपना तमाम विकेटों के पीछे किया। 3 overs completed, 30 for the loss of 3 wicket. 25 to get from remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. New batsman Ramnath is now comes out to the middle और गेंदबाज पहली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और इस गेंद पर पूरी तरह बल्लेबाज बीट हो गए अंतिम क्षण में और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। गेंद को टॉस किया था इस वक्त, बल्लेबाज को ललचाया था कि स्ट्रोक्स खेले और यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्रोक्स खेलने में चूक चुके हैं। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद, लेग स्पिन गेंदबाजी और डॉट गेंद एक बार फिर से उनके खाते में जुड़ता हुआ। नाउ the asking run rate is now creeping up for them. 25 to get from 10 balls. और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके ही यहाँ पर दम्बेकल्लू चैलेंजर्स के बल्लेबाज को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और गेंदबाज आदि भट्ट क्वैक्स एंड फाइंड्स द गैप। इस बार धीमी लेग कटर गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को ऑन साइड पर पुल करने का। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था and he just hammered it away to the onside for a boundary. 34 for the loss of 3 wicket, 21 to get from 9 balls. Again turns it over the corner, down to square leg, gone through a quick single and get it comfortably. In fact it's a boundary. और अगेन को फील्ड किया गया था लेकिन शायद फील्डर का पैर सीमा रेखा को इस वक्त टकरा चुका था। और यहाँ पर देखिए एक्चुअली किस तरीके से हुआ था। दिस टाइम यस इट्स अ बाउंड्री और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 38 रन पर। 17 रन टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स नाउ। एक या दो चौका लगातार निश्चित रूप से दम्बेकल्लू चैलेंजर्स को इस मैच में वापस ला सकता है। और गेंदबाज आदि फैंटास्टिक फ्लाइटेड डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप।
Just wanted to follow that one by the right-handed batsman, not succeeded. And collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Now, 7 balls left, 17 runs required. अंतिम 22 ओवर में आदि गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. Quicker, absolutely quicker, comparing to the previous delivery. और एक तेज गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं. 38 for 3, 4 overs bowled, and now last over remaining, 17 runs to get from the last over. That means in remaining 6 deliveries for Dambekallu challengers. वरुण कामत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए. दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है. Absolutely jam-packed stadium. We are just watching here in this beautiful Canberra High School ground. और जहाँ तक सवाल है ओवर की पहली गेंद वरुण कट किया गेंद और इस बार क्या छूट चुका है, लेकिन चौका बचाने में सफल हो चुके हैं. सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहाँ पर जुड़ता हुआ. नाउ 5 balls remaining, 16 runs to get. और अब ऐसा कहना पड़ेगा दम्बेकल्लू चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को सिर्फ चौके ही इस मैच में वापस ला सकते हैं. और इस बीच गेंदबाज वरुण कामत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. Driven and finds the gap as well. No, in fact it cuts it off brilliantly just inside the fence by the point fielder. बेहतर फील्डिंग वहां पर. सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. अब अंतिम अवकाश. ऑलमोस्ट 4 fours required in the last 4 deliveries. 4 गेंदें 15 रन चाहिए. लगभग 4 चौकों की जरूरत अंतिम 4 गेंदों में. अंतिम अवकाश. द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ दम्बेकल्लू चैलेंजर्स. और गेंदबाज वरुण कामत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रामनाथ के लिए. मिसेस. दैट्स इट. नाउ 15 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज. और इन 3 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड न फेंकते तो यहाँ पर सुधिंद्रा वॉरियर्स की विजय निश्चित है. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए. क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज. और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में गेंदबाज तीनों गेंदों को सही फेंकते हैं या नहीं. और इस बीच गेंदबाज वरुण कामत कट किया. बेहतर स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल. गॉट ऑन अ बाउंड्री. 44. नाउ 2 balls left and 11 runs required. 11 रन चाहिए 2 गेंदों में. और इस बीच वरुण कामत तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Again chipped away and stopped brilliantly just inside the fence. Just a single. 45. Now last ball remaining, 10 runs required. निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सुधिंद्रा वॉरियर्स अपने विजय के द्वार पर आकर यहाँ पर रुक चुका है. अंतिम गेंद पर चाहिए 10 रन. And the last ball of the match is now coming up from the hands of Sudhir Varun Kamat to Gopala Krishna. Misses. That's it. 9 runs victory for Sudhindra Warriors against Dambekallu challengers in the match number 6 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2025. And with that victory, Sudhindra Warriors back the complete points. So now the 7th match is now going to start between Nagarkatte Panthers versus Ugrana Sevaks within just short while. And we'll be back right after the short break with my friends Satish in English, where the next match will going to start. Now it's time for break. Also, it's time for DJ. Thank you. Dhanyavad. नेक्स्ट मॅच इमिडिएट स्टार्ट जाऊ का उग्राणा सेवकान फील्डिंग घेतला. तशी सगळं प्लेयर्स इन्फॉर्मेशन कोणाला जेवण काही नाही तर की फुटबॉल वचून प्लेयर्स कसं जेवण करून येऊ का वरला आणि मागीर जेवण कर का मॅच इमिडिएट स्टार्ट कर का.